अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम आउटिंग पे जा रहे हैं तो जल्दी से मैं चीज़ें रेडी कर लेती हूँ ताकि बाहर जाके एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर मैं अंडे और खीरे के सैंडविचेस बना रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। यहाँ पर मैंने 6 खीरे ले लिए थे और उसको छिलके समेत मैंने कद्दूकस कर लिया है। पानी इसका मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ लिया था और यहाँ पे 11 से 12 मैंने अंडों को बॉईल कर लिया है। इसको अब अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि आप ये बॉयल अंडों के सैंडविच खा रहे हैं। अंडों को मैंने मैश कर लिया अच्छे तरीके से। खीरे इसमें शामिल कर रही हूँ। नमक पौना चाय का चम्मच, नमक आप अपनी हस्ब ज़रूर डालिएगा। 2 चाय के चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1.5 चाय के चम्मच मैं इसके अंदर पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर क्रीम चीज़ डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और मिक्सचर हमारा रेडी हो जाएगा। मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी और उतनी देर तक ब्रेड के कॉर्नर्स कट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सैंडविच ब्रेड ले लिया है और जितने भी सैंडविच आपने बनाने हैं कॉर्नर्स आप कट कर लें। 1 से 2 दिन आप मिक्सचर फ्रिज में बना कर रख सकते हैं, आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इसकी साइड्स कट की हैं इसको आपने ज़ाया नहीं करना, इसको आप एज अ ब्रेड क्रम्स यूज़ करें। इसको क्रश कर लें और कबाब बनाने में या फिर कुछ भी फ्राई करने में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रेड में मिक्सचर लगा लूँगी। किसी भी शेप में आप इसको काट सकते हैं, ट्रायंगल या फिर रेक्टेंगल। तो मैं इसको रेक्टेंगल शेप में काट रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार और लाइट किस्म के ये सैंडविचेस बनते हैं। सैंडविचेस देखिए अब हमारे रेडी हो चुके हैं। अब जल्दी से मैं इसको बॉक्स में डाल देती हूँ। कुछ मैं एयरटाइट बैग में डाल रही हूँ क्योंकि बस मेरे पास एक ही बॉक्स था। चाय बनाने के लिए पानी गर्म कर लिया मैंने। तो यहाँ पर मेरी छोटी बेटी वाइट सॉस पास्ता रेडी कर रही है। तो एक जो बोल है वो घर के लिए बना लिया है और एक बोल बस वहाँ जाकर हम एंजॉय करेंगे। चीज़ भी ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। अब मैं इसको बस ओवन में रखूँगी और बेक कर लूँगी और उसके बाद बस हम निकलेंगे। यहाँ पर जल्दी से मैंने प्लम केक भी बेक कर लिया था, तो बस इसके पीसेस कट कर रही हूँ। वहाँ जाकर चाय के साथ ये बहुत ही मज़ा देंगे। यहाँ पर मैं एग कार्टन यूज़ कर रही हूँ जिसके अंदर अंडे आते हैं। क्योंकि ये मैंने बेक किया है पास्ता, तो इससे इसको मैं डायरेक्ट नहीं रख रही हूँ, इसके ऊपर रखूँगी और पास्ता के ऊपर भी जो आधा हिस्सा है इस कार्टन का तो वो रख दूँगी ताकि इसके ऊपर आसानी से हम और भी चीज़ें रख सकें। तो मैं इसके ऊपर सैंडविचेस रख रही हूँ जो रेडी किए थे और ये हमारा सब सामान रेडी है। So today we are going to Manar, Abu Dhabi, which is a public art Abu Dhabi initiative showcasing an exhibition of new commissions and site-specific light sculptures, projections and immersive artwork by local and international artists. Manar is the Arabic word for lighthouse, will offer residents and visitors opportunities to engage with stunning artworks and experience the transformative power of light.
The artworks will be displayed across several key locations throughout Abu Dhabi, including Lulu, Saadiyat, Jubail, Al Samalia, and Fahid Island, and other coastal areas such as Cornish Road and the Eastern Mangroves. So in this episode, I will show you Lulu Island artwork. So let's go! It is an exhibition that marries the elements of nature, water and light art to create a one-of-a-kind experience unique only to Abu Dhabi. The artworks will be on display as part of Manar Abu Dhabi until Tuesday, January 30th, 2024. If you are planning to visit Manar Lulu Island, you will need to grab a ticket. It costs just 25 dirhams per person, and that includes the ferry ride to the island and back. It's a great deal for an awesome adventure. Can't wait to see you here in my vlog. Rafael Lozano-Hemmer is a Mexican-Canadian electronic artist who has taken over Lulu Island with 10 artworks dotted along a 2.3 kilometer route. So if you are planning on visiting, wear comfortable shoes. Ladies and gentlemen, here in Lulu Island, we have 10 super amazing installations for us to enjoy and excite. Perfect. Ladies and gentlemen, the collider is actually made up of 300 pencil beams of robotic searchlights. Okay? Like I said, while standing, hold on to something. Please, it's amazing. You understand? Okay. Ladies and gentlemen, there's a fact about this light, and that is, these lights you see cannot be seen by birds or insects. This is only visible to human eyes. Yes. You will no doubt have seen Collider already, as this piece can be seen from up to 5 kilometers away. For this piece, searchlights have been placed around the island facing downtown Abu Dhabi and move in a wave-like motion. This is a translation stream. Poems from several languages have been projected onto a stretch of trail, with letters moving gently as you continue along the path. With no one on the path, the poems are unreadable, but the interactive piece detects your presence and brings the words together so that you can read them as you stroll. I actually didn't know there would be a food stall here, so I brought my own homemade food. But guess what? You can also grab some delicious bites from the food stall if you want. You can become a part of Manar Abu Dhabi by heading to Recorded Assembly. The 3 projected portraits morph the faces of visitors into one another and can mix up to 600,000 recordings.
Another piece that you can become a part of 4,000 additional light bulbs have been arranged across Lulu Island for Pulse Island. You can add a recording of your heartbeat and the lights will move in sync with that until someone else records their pulse. Lozano-Hemmer has used thermal cameras to create thermal drift. Stand next to the wall and the cameras pick up the heat from your body and turn them into light. At Dune Ringers, the valley has been linked up to several microphones which echo what has been previously said as you admire the waves of light transforming the dunes. Okay, very funny. Now, wait. Return sound will wait. It's coming or not? We'll see. Wait. Will it come? Really? Yeah, it will come. I think let's hope for the best. Yeah. I'll be waiting for that. Indian person. Hundreds of spotlights have been aimed at an empty lake bed towards the north of Lulu Island for Voice Basin. The light beams react to voice recordings sent through two intercoms and interact with previous recordings before being deleted. Bye-bye, good night, Abu Dhabi. Bye-bye, good night, Abu Dhabi. Bye-bye, good night, Abu Dhabi. Three Abra boats floating in Lulu Island's central lake are illuminated with white lights that are constantly translating James Joyce's Finnegan's Wake into Urdu, Arabic, Hindi and other languages for Translation Lake. के बाद मुक़द्दस जज्बात की आरसात इकरार किया शश मैं सिर्फ उन पांचों को बराबर जंग मैं इंटेंशन The world's largest spherical aerostat has been suspended from a 14-meter tall mast with a rotating image of Earth projected onto it.
The sphere casts shadows of passers-by, and as they cover different cities, the local radio stations will begin to play. Last but not least, at the Sandbox, there are 2 elevated sandboxes where a camera detects your presence when you stand on them. It then projects a tiny version of your hand as well as the huge version of your hand over the arena, so that you can see the same thing in 3 scales, the third being your actual hand. So the way that it shows that how the artist got inspired for Pul Island was when he was actually expecting twins, him and his wife, and they went for an ultrasound and they asked the doctor if they can hear both of the heartbeats together, and the doctor said that's not possible, you can hear one at a time. And the artist took that as a challenge, and he said that I'm going to create something that where we can hear multiple people together, and he created Pul Island where you can hear 4,000 humans heartbeat together. And it's said that when there's no underneath those sensors, it's actually the twins' heartbeat that you listen to. Yeah. Wow, amazing. Mashallah, mashallah. Thank you so much for telling the beautiful story. Thank you. It's my pleasure. What an incredible showcase of artistic talent at Manar, Abu Dhabi. The vibrant colors, intricate details, and thought-provoking pieces truly left a lasting impression. It's amazing how art has the power to inspire and connect people from all walks of life. And here is a little suggestion: if you are planning a visit, weekdays are the way to go. Weekends can get pretty crowded, so weekdays offer a more relaxed and enjoyable time. Don't miss out on this hidden gem of Abu Dhabi. I hope you enjoyed this virtual journey through the exhibition. Until next time, keep exploring the world of art and creativity. See you in my next vlog. Till then, Allah Hafiz.